understand music a little bit, in Indian classical music, there's a concept called Aroha and Avroha. Aroha is ascending. When you go up the notes, Sa re ga ma pa dha ni sa. भाई जोर से चीख थोड़ा और, आवाज तो है नहीं तेरी. इसके पीछे भी लोग बैठे हैं क्या? अरे भाई साहब, आप लोग बीच में कहां खड़े रह गए फिर? ऐसा थोड़े ना चलता है. वो लोग उन्होंने कोई गुनाह किया है पीछे वालों ने? चलो हटो हटो. अरे फोटो का टाइम नहीं है भाई, चलो मुझे उनके पास जाने दो. कम ऑन. यस. देखिए भाई साहब को एक इधर गुन. अरे भाई थोड़ा सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा आराम से बैठिए. कम ऑन, BNI disciplined members, sit down guys. Sit down, let me speak to the people. Why you want me with selfies? Just move. Just बैठ जाइए ताकि मैं बात करूं सबसे. हम मैं सब जगह जा रहा हूं, बैठिए थोड़ा, बैठिए प्लीज. थोड़ा बैठ जाइए आराम से, है ना? हाँ जी, चलिए सर, बात करने दीजिए लोगों से, है ना? देखिए यहां भी आ गया ना जी, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, सब एक. सबका पोटेंशियल एक, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज एक. राधे राधे. सब. अरे भाई साहब चलो ना भाई, क्यों? सबके लिए एक. आरोह सारे गा मा पा धा नी सा ऊपर जाता है, और अवरोह नीचे आते समय सा नी ध प म ग रे सा. सारे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा. कैन वी ऑल सिंग टुगेदर प्लीज? सारे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म. लाउडर गाइस, एवरीबॉडी टुगेदर. सारे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा. आरोह. हाँ बस अभी आप 3-4 लोग यहीं रहिए, सारे बाउंसर्स. एक को आगे नहीं आने देंगे आप. आपका काम अभी है ना. चलिए मुझे खुले घूमने दीजिए, आप किसी को आने नहीं दीजिएगा. I love to be with people, but then I can't talk, right? मैं बोलने आया ना. मुझे कोई दिक्कत नहीं लोगों के साथ बस ये घूमने में बस, लेकिन बोलना तो पूरा करने देना भाई. Isn't it, sir? Yes. Oh, thank you, Mr. Jain. Oh, Aroha and Avroha. When you're going up, guys, everybody's going to be around you, know? Sare ga ma pa dha ni sa. I know him. He's at NEET today, 20 billion. इधर कोई नहीं है 20 बिलियन, वो अलग बात है. 20 बिलियन है, ऊपर जा रहा है. सारे गा मा पा धा नी, यहाँ 100 पे पहुंच गया वो. आरोह में तो सभी साथ देंगे भाई साहब. जब नीचे आता है ना, सा नी ध प म. ये कौन है? ग. ये कौन है? रे. हु इज ही? सा. Guys, when you're going up, the biggest problem is ego. Success gets into your head and makes us arrogant. I've seen with business people growing, the biggest issue with growth is arrogance. They just lack humility. Humility manifests growth, not strategy. Strategy is only a part of growth. If strategy brings arrogance, forget impact. Forget exponential growth. Forget it. विनय के बिना, विनम्रता के बिना ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना केवल सपना होता है. स्ट्रैटेजी तो हजारों बिजनेसेस बना रहे हैं, कहां बड़े हुए वो लोग? स्ट्रैटेजी तो हजारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, कहां बड़े हो रहे हैं वो लोग? स्ट्रैटेजिस्ट तो हजारों लीडर्स बना रहे हैं, उनके पास तो पक्की ब्लूप्रिंट है, कहां बड़े हो रहे हैं वो लोग? आप लोग सब यहां बड़े होने के लिए आए हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं. यू आर ऑल हियर एट BNI to make sure that you have the right kind of mindset to crack, nail, rock, smash your growth. और अगर वो करना है तो दोस्तों एरोगेंट होके नहीं चलेगा. आरोह में एरोगेंस आता है क्योंकि सब ऊपर जा रहे हैं. सा रे ग म प ध नि सा. इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मशहूर होना
पर मगरूर मत होना। मशहूर होना पर मगरूर मत होना। कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना। मशहूर होना पर मगरूर मत होना। कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना। मिल जाए चाहे सारी दुनिया आपको, कभी अपनों से और अपने आप से दूर मत होना। राइट। सक्सेस में बस यही देखा है साहब मैंने, लोग अपनों से और अपने आप से दूर हो जाते हैं, और जब एरोगेंस आती है तब इंपैक्ट निकल जाता है। खोखली गोलियां हैं आपकी, प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो दुनिया को, अपने बिजनेस से खोखला शिट, एम्प्टी ब्लडी क्रैप, बुलशिट इज व्हाट आई कॉल इट। एम्प्टी एम्यूनिशन वेयर देयर इज नो गन पाउडर इन दोज बुलेट्स। प्रोडक्ट तो बिक रहा है, परिवर्तन नहीं ला रहा है। इट्स नॉट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट, द चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन that it was intended to when you started your businesses. And which is exactly why आरोह में विनय, विनम्रता, humility are extremely critical. आरोह में जब ये करोगे ना तो अवरोह में भी लोग साथ रहेंगे। जब आरोह में अकड़ोगे तो जब नीचे जाएगा सा नी ध प म ग रे सा, बोले ये तो अकड़ता है, कोई जरूरत नहीं इसका साथ देने की। पीपल क्विट नॉट ऑन गुड आइडियाज, पीपल क्विट ऑन टॉक्सिक लीडर्स। नोबडी क्विट्स ऑन गुड आइडियाज। A good idea is always a good idea. It's a great idea. Nobody is giving up great ideas. People are giving up toxic leaders. बोले ये नहीं चाहिए भाई, कहीं और जाएंगे जहाँ कीमत अच्छे लोग हो, अच्छे लीडर्स हो। And I'm sure all of you are like that. I'm not here to say that you're not. Sorry, don't get me wrong. I'm just saying it's important for us to remind ourselves constantly. Because the more we grow, we are always under the risk of falling into that trap. We risk falling into that trap. So मैं ये बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे हैं। बस ये कह रहा हूँ कि हम सबको ये बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि भाई ऐसी जिंदगी और ऐसी ग्रोथ होगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी जरूरत सबको है, इसको वहम कहते हैं। एक होता है अहम, दूसरा होता है वहम। अहम इज आई डोंट नीड एनीबडी, अहमकार। वहम is everybody needs me. What a crappy joke that is. Everybody needs me? Really? I mean, really? Everybody needs me? Serious? Are you serious, guys? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। अरे पल दो पल के शायरो, अपने आप को इतना सीरियसली लेना बंद करो। पल दो पल के शायरों, जो आए दो पल के लिए चले जाएंगे। दुनिया को और किसी को आपके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I don't know why we started assigning so much sense of false importance to ourselves. That without me nothing can function. The world has functioned beautifully before, and the one will continue to function beautifully after us. All we have is the gratitude and privilege, the fortune,
that we've been blessed with this opportunity to grow, contribute, add value, make a difference in the way we are gifted. And which is exactly why humility, groundedness, growth comes from groundedness, growth comes from humility, growth comes from cracking the right kind of mindset. Be absolutely aggressive in your strategy, but let that aggression never bring arrogance. That's it. That's about it. And when we can do that, trust me guys, you will see the difference. You will see the difference. बहुत फर्क पड़ता है ना? हाय 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 थक गया, हाय मैं तो थक गया. You know, if you know, you know. You know, if you know, you know. IYK, YK. Hashtag IYK, YK. हाय मैं तो थक गया. Just, you don't have to say what it is. If you know where the line comes from, you know very well. A friend of mine, she's a very good friend of mine, so I sometimes take her line saying, oh, hi, मैं तो थक गया. Speaking about all of these things. But here's something else that I'd like to say and leave you with that for today. For the simple reason that I was meant to start at 2, we've started at 3, and I have something already scheduled back there. And since we are already behind schedule at your event, I must be on schedule for my schedule. So in about 5 to 7 minutes, I have to wind up. Although I would love to just stay with you and speak if we were on schedule, I would have been able to give you way more time than what I can right now. Just because we are behind schedule, I'm going to have to push off regardless, you know? Because I'm a man of time. And for me, if I've given time to somebody, that matters to me more than anything else in the world. Because the first strategy and the first thing of growth is to value another person's time. Right? That's very critical. If somebody's given us time, to be able to value somebody's time is absolutely a critical component of how we grow, because then people value us when we value another person's time. But having said that, my heart just doesn't agree to just quit like that, because I was meant to speak a bit longer. But now, since I can't, I'm still going to I've already told my team to tell them that we might be 15 minutes delayed. So I have already told the team ahead, so which gives me another 5-8 minutes to say what I need to say, and then zip past all of you guys. Thank you, madam. Thank you, so heartfelt. Oh, thank you. Cringy expression, sorry. Look at this guy cracking up like mad. Oh, ho, ho. I'll tell you something. We were talking about this Aroha, Avroha, and coming. But how many of you would like to have more money in your life, guys? More money? Okay. Lovely. And those of you who are not raising your hands, you expect me to believe you, right? Wow. A teacher came. Yeah, the question should have been another way. Definitely, sir, definitely. One teacher came to a classroom of 7-year-olds and asked a boy, what do you want to be when you grow up? The boy said, well, I want to be a multi-billionaire. I want to have like 365 cars, one for each day of the year, 20 homes, a private jet. Teacher said, भाई, तुझे आंसर मैंने बोला क्या बनना चाहता है, ऐसे लिखने नहीं बोला है, क्या बनना चाहते हैं? She turned to a girl whose name was Pooja. Hey Pooja, please don't answer this question in an essay form. Tell me in 2 words, what do you want to be when you grow up? Pooja said, Varun's wife. जो वो करेगा ना, कर लेने दो, मैं बस कर लेती हूँ. That by no way, shape or mean denigrates the power of a woman. A woman doesn't need a man to grow. She doesn't. Growth is not what a woman needs a man for. It's emotional connection that a woman and a man need each other for. Right? आप एक दूसरे को कनेक्शन प्यार के लिए साथ में आए, ग्रोथ के लिए. स्त्री में भी शक्ति है. हमारे भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और दुर्गा देवी. लक्ष्मी देवी finance minister of the universe, Durga Devi defense minister of the universe,
Saraswati Devi, Education Minister of the Universe, when 3 portfolios most important are handled by women, that tells more than anything about our culture, right? And I'm sorry to see how women are not given those positions today. Guys, in a world which is so male chauvinistic, in a world which is so gender biased, we need to go back to our culture and allow more women to represent the power of business, the potential of growth, the creativity that is beyond what many men can think at times. जरूरी है, नहीं जरूरी होगा तो फिर फेमिनिज्म से पिसोगे. Feminism is not some liberal idea. Feminism is a result of abuse. Feminism is a result of not giving opportunities. Feminism is a result of no equal opportunities. भाई साहब, सच बता रहे हैं, पूजा को वरुण की जरूरत नहीं है ना? वो ऐसे भी कर सकती है. वरुण को भी पूजा की जरूरत नहीं है. जरूरत केवल होती है इमोशनल के लिए. ग्रोथ का पोटेंशियल दोनों में ठूस ठूस के भरा हुआ है इंडिविजुअली. और जब दोनों साथ में आए तो फिर सोने पे सुहागा है ना. प्यार भी करो, बिजनेस भी करो, मजा भाई, मस्त. That's the fun part of it. But a lot of times these young lads who talk about selfies and these girls coming to me and the numbers they said 2.5 billion and 25 million, United Nations, this award, that award, all kind of apparent accolades in a monk's life. In my new book called You Can Have It All, which releases the day after tomorrow, it's a story about a destination wedding, but you guys pick it up. Destination wedding where I am and whole wisdom unfolds to a incredible plot, which was a real plot, by the way. When you read it, you will know. It's very interesting. But nevertheless, there I say that celebrity monk is an oxymoron. Celebrity or monk, opposite word होते हैं. जैसे happily married is an oxymoron. Sorry, my apologies, guys. Business ethics is an oxymoron. Sorry, guys, seems like opposite words a lot of times. So, still people do keep asking me, how did you crack those numbers? Because you're here to talk about growth, right? I'm not here to talk about some touchy-feely stuff that leaves you like, oh, that's spiritual stuff. No. We have spiritual ideas, but real stuff. Real stuff. I have spiritual ideas, but the growth that I have today is real stuff. It's not some wishy-washy, hodgepodge kind of. Nobody calls you to the General Assembly Hall of United Nations, the New York headquarters, when UN invites you. You haven't applied for it. When the UN invites you to speak at the General Assembly, man, that's something. Not to boast, not to throw names, but to tell you that if you look at it as a growth, then there must be something there that's been done right. And that's what you guys need to do. Simple. Whatever the space is, I'm just telling my story so you get your inside right, and you can crack it in the way you are and the way you're meant to go up. अब में से कितने लोगों ने तितलियां पकड़ी है कभी जिंदगी में? हाय 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 हाय. कितने लोगों को याद है? We kind of tiptoe, right? Sometimes even remove our shoes and we're like tiptoeing on our toes so that the butterfly doesn't fly away. और कितना ही आप शांति से जाइए, वो तितली उड़ जाती है. भाई साहब, वो तितलियां उड़ती रहती है, जिंदगी में भी और बगीचे में भी. क्यों हंस रहे सर इतना? कितनी उड़ी हैं तितलियां अब तक? ओए होय 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 होय. कितनी, उस मुस्कान के पीछे क्या क्या है मैं नहीं जानता. बलि का बकरा मिल गया मुझे ऐसा. He was laughing so hard I couldn't resist but said do it to him. तितलियों के पीछे दौड़ने से तितलियां नहीं पकड़ी जाती दोस्तों. जितना तितलियों के पीछे दौड़ोगे वो तितलियां उड़ जाएंगी. प्यार चाहते हो, जितना प्यार को चेज करोगे वो दूर जाएगा. प्रॉफिट्स चाहते हो, जितना नंबर्स और प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे उतना प्रॉफिट्स दूर जाएगा. फिटनेस चाहते हो, जितना उस फिटनेस के पीछे भागोगे वो फिटनेस दूर जाएगा. Fitness, love, growth, spirituality, business growth, profits, numbers are all like butterflies. The more you chase them,
the more they fly away from you, guys. What if we built a beautiful garden with fragrant flowers of the best quality? You don't have to run after the butterflies. The butterflies come and settle down in your garden, right? And therefore, if you want growth, firstly, stop chasing growth. If you want growth, the mantra is stop chasing growth. Create a garden. Create a garden with the right mindset, the right principle, with the right strategy, with the right blueprint, with the right network, with the right opportunity, the right resources, with the right teams. Create that garden. Work on the garden so much with bringing the best quality flowers so much that growth comes chasing to you. I have never paid a single penny for a social media post. We have invested zero money in our social media posts. Zero money. Whereas there are monks and sadhus in the country who spend in the range of 4 to 5 crores per annum for social media growth. We've put in zero money. Zero money. Am I saying you shouldn't? That's not the point. I'm just trying to tell you, we didn't chase them. We built that garden. You build that garden. Trust me, what you are looking for will start looking for you. खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, right? You work so well on what you do that the world doesn't have a choice but to come to you.